Well, hello everybody, welcome to my channel Shabby 101। हम खेल रहे थे हॉगवर्ड लेगेसी और हमारा गेम प्ले है पार्ट 10। तो Revelio. कंटिन्यू किया जाए, लेकिन यहाँ पे और भी सिपाही है। और जहाँ तक कि मेरा अंदाज़ा है, मुझे यहाँ पे कहीं भी ट्रेजर तो नहीं दिख रहा, तो हमें ऊपर से ही जाना ज़्यादा बेटर होगा यहाँ से। लेकिन ऊपर कैसे जाएंगे? जैसा कि हमें ट्रेसेस मिल रहे हैं। ये क्या, हमें जादू करते ही Revelio. Seems I ought to explore this archway from both sides. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. कुछ चीजें बदल जा रही, कुछ चीजें रास्ता खुल जा रही, अभी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं, उल्लू की आँख मिली है, माँ की आँख मिलती तो समझ में आता। उल्लू की आँख। अभी हम लोग वहाँ कैसे जाएंगे? I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. तो हमें ऐसा करना था। Revelio. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. I'll never get used to these floors. Revelio. मुझे लग रहा है यहाँ पे लड़ना पड़ेगा। आ गए शैतान के पिल्लों। Incendio. Confringo. Incendio. विंगार्डियम लेवियोसा नहीं काम आ रहा है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये वाला अटैक भी लेना ही पड़ेगा। Expelliarmus. होली शिट, Incendio. काम नहीं आया। Confringo. Expelliarmus. जबकि दूसरी तलवार आ रही है। Expelliarmus.
Incendio. Expelliarmus. Confringo. भाई तुमको ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। मैं अपने नॉर्मल अटैक तो कर ही नहीं पा रहा। Confringo. Protego. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Protego. एक गलत मूव्स और स्कीम तो ट्रायंगल जैसा कि मैं बहुत कम यूज करता हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि बदल दूँ। इसको नीचे रखता हूँ। नहीं नहीं यार, ऊपर इसको नीचे। Revelio. ये भाई ये घाई अच्छी नहीं है। अभी अपन लाल पे है, लाल पे है तो हमको नीला। अरे यार Accio. इसी तो पहला। तो ये एटमॉस्फेयर इसीलिए बता रहा है मेरे को। Revelio. Accio. Revelio. Accio. कैसे कैसे करेंगे हम? उधर जाएंगे वहां तो कुछ भी नहीं है ना। खींच रहा है यार, खींच रहा है। Accio. तो मैं ये नहीं खींच पाऊंगा। Accio. शिट यार, कहाँ फंस गया? भाई साहब, कुछ ना कुछ झोल झपाटा हमको करना पड़ेगा, बिकॉज मुश्किल पड़ रहा है यार ये तो। Accio. ब्लू में तो नहीं दिखा रहा है। ये देखो वहां नहीं दिखा रहा है जब अपन लाल में है।
अरे यार, क्यों क्यों तू ऐसा कर रहा है भाई, बम मार रहा है। ऐसा करने का अपने को पावर को है ना अनलीश करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे रुकने का, अरे यार पहले अच्छे से कर लिया था। पीछे से जाता हूँ। ओ पीछे पीछे हो रहा है यार। Expelliarmus. Accio. ये तो बड़ा टेक्निकली डिफिकल्ट निकल गया दोस्तों, हो ही नहीं रहा हमसे। सही में ट्रायल अपने लिए है तो खींच नहीं पाऊंगा ना, मसले ही है, मैं खींच नहीं पाऊंगा। मरा ये गरीब। अगर हम राइड भी जाएंगे तो नहीं खींच पाएंगे, क्या लगता है खींच लेंगे क्या? इजी था पर हम ही ने इसको डिफॉल्ट बना दिए थे, क्योंकि मुझे वो चेस्ट भी नहीं लेना था, कोई फायदा नहीं वाली। Revelio. साला लुटेरे लोग क्या था ना, जाएगी नहीं। अब यहाँ पे क्या महासंग्राम होने वाला है, जो अपने को पहले जो खून दे दिया। Revelio. पोशन में पोशन मिल रहे, पोशन तत्व नहीं मिल रहे। लग तो रहा है मुझे यहाँ पे कुछ तो कांड होने वाला है, बीच में है ये। Don't like the look of this. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. मुझे तो लगा ही था। Confringo. Protego. Expelliarmus.
Confringo. Expelliarmus. नो तेरी की तो अब और बड़ा आ गया भाई साहब। कभी होगा। अरे Confringo. नानी माता रू। Expelliarmus. Protego. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Accio. होली शिट। अरे गलत जगह फेंक दिया रे तू। Confringo. यार Incendio. यहाँ से आग नहीं होती। Expelliarmus. लगता है मेरे कैबेज अब दिखता पड़ता मेरे को। एक सेकंड इंडोर्स भी ले सकते हैं हम लोग। और ये भी ले लेते ना, ट्रायल के ट्रायल भी हो जाएगा। Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. भाई साहब जल्दी उठा लो। फोकस पोशन भी ले लो। Confringo. Incendio. Expelliarmus. गोभी सही है लेकिन गोभी है क्या? Confringo. Protego. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. ये ले, Expelliarmus. ये ले। Confringo. बच ही गया यार, ये पिलर आ जा रहा है। Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio.
मिला तो साला फाइनली। What a relief. मेरे जितने भी पोशन थे मैंने यूज कर दिया उसको। जहाँ तक कि हमने कर दिए तो इसमें कुछ मिला नहीं यार हमको, वापिस जाने बोल रहा। Another pencil. मिला ना यहाँ पे भी ट्रेजर एक, साला सर डिक्रीज वाला ही मिल रहा है। इतना उड़ाने के बावजूद भी कुछ मिले तो ना ढंग का। Revelio. यहाँ से जाने का रास्ता है, लेकिन जाने से पहले हमको मेमोरी देखना पड़ेगा, नहीं तो कांड हो जाएगा भैया। चलो मेमोरी देखते हैं। एक पिलर बना रही है। Your ability to transfigure the world around you is remarkable. अपन भी ऐसा What बना is पाएंगे it? क्या? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. पेन लेना है तेरे को, पिलर नहीं बनाना It is चाहती हुआ। tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. बुड्ढा सही सिखा तो रहा है, लेकिन ये कुछ अड़ियल लोग रहते हैं, एड़े लोग, समझ भी नहीं आ रहा उसको अपने बाप का दर्द। Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. बड़ी हो गई यार, Professor प्रोफेसर Rickwood? बन गई। I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. नेवता दिए कहीं मारवाड़ तो नहीं देगी। कुछ तो कांड करी है ये लड़की के इर्द गिर्द ही, मतलब स्टोरी दिखा रहा है कि पहले वो जाते जादूगर लोग। Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. तो फाइनली हम लोग आ गए मैप चैम्बर में। ये मैप बड़ी प्यारा लग रहा है मैप चैम्बर का। ऐसा लग रहा है नीचे पूरा पहाड़ 3D मैप बना हुआ है।
उसके ऊपर कांच लगी हुई है। दूसरा प्रोफेसर भी आ गया, क्या What बात है? have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then, Wait, No. Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go, जी बोलिए प्रोफेसर। Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. That's keeper trophy earned. Wow, what a beautiful Hogwarts लग रहा है यार। समर चालू हो गया क्या? Excellent. I should ask Sirona at the Three I've got spectacular news. The broom upgrade's ready. Stop by the shop when you can. अच्छा, broom upgrade. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your ये कौन है earliest भाई? convenience. Watchman. I believe that we may be able to help each other. देखो ये लॉक खोलने वाला, अगर हमको जादू आ गया ना, मैं बहुत लॉक खोल के ना ट्रेजर लूट लूंगा। साला दे ही नहीं रहा लेकिन। Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach अरे you वाह। Descendo, useful for pulling objects to the ground. मेरे को शायद लगता है लॉक वाला जादू मिल गया है, दिख भी रहा है मेरे को।
चलो मैप में जाते हैं। ताला बना हुआ था ना, किधर है भाई ताला बना हुआ था? तो इसमें जाना पड़ेगा। I need to progress in my studies and complete Professor Sharp assignment to earn so before on with this। तो अपने को लर्न करना है, लेकिन रिक्वायर 12, तो ये लॉक क्यों है भाई? मुझे लगा ओपन होगा। तो ये डिप्लोमा सीखने आया। कलेक्ट रोल, लेविटेट द एनिमी। ये नया चीज, मैडम के पास जाना है। और ये भी अटेंड पोशन क्लास ड्यूरिंग द डे। और ये क्या, एक्वायर एंड यूज ऑन मल्टीपल एनिमी। जो मुझे सिखाना चाह रहे थे वो तो मिला नहीं, अलग अलग ही वो मिल गया। ये क्या है? आई नीड टू गो टू द बीच क्लास। लॉक वाला शायद यही अपने को रिवॉर्ड, यही अपन क्लास अटेंड करेंगे फिलहाल। फिर उसके बाद बीस्ट क्लास भी जाएंगे। आज ये 2 क्लास अटेंड करना है मेरे को। लॉक वाली तो करना पहले, बिकॉज आप लोग को मालूम है मैं कुछ खोल नहीं पा रहा हूँ सच्ची में। तो ये हॉगवर्ट्स की वही जगह है जहाँ पे सीढ़ियाँ बदलते रहती है, पर यहाँ पे सीढ़ियाँ बदल नहीं रही, यहाँ पे सीढ़ियाँ प्रकट होती है। देखो कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। ये देखो प्रकट हो गई, जबकि नहीं थी, अभी गायब हो जाएगी। देखो गायब हो गई। Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue there? Watch what happens when that light changes from day to night. ये क्या भाई, लाइट चेंज होती तो क्या करने का? डे टू नाइट, अभी दिन से रात हो गई। पहले ब्लू था। अच्छा बेटा, अब ये हो। Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes. Terrifying creature that can see the future.
wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. ठीक है, लेकिन क्या I will be happy to help. I don't want to get in trouble. What's in it for me? I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Alahomora. Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Alhamura. बहुत ज्यादा नहीं लॉक खोलने का. चलो ताला खोलने का फाइनली जादू सिखा दिया हमारे को मिस्टर. मून ने किधर है रे बाबा? Alohomora. अब हमें ही खोलना है. अच्छा, तो ये ऐसा है. और क्या करने का? यूज द L and R to move sparks and rotate the dial until both correspond gear are activated to release the lock. अच्छा. You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle, after all. I have a few questions about the demiguise statues. Whew, just hearing the name sends chills down my spine. Oh, very well, if you must. Who do you suppose planted the statue? Do you know who is behind the demiguise statues? No, but I suspect the motive is jealousy. People have always been jealous of my skills, popularity, and dashing good looks. No one is above suspicion.
remember me. Why can't you remove the statue yourself? हाँ Why कुछ can't भी you नहीं get कर the सकता. demiguise moons yourself? As I mentioned, I have an intense aversion to demiguises. Perhaps one day I'll tell you more about it. Whoever planted the statues everywhere knows about my fear and is seeking to make it my ruin. ठीक है ज़्यादा I नहीं have nothing पूछता. more to ask. Come and see me once you've found the 2 moons. Revelio. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cave fathers that can scarcely tell the difference between Aconite and Asphodel. बहुत जल्दी देख रहे हैं. Well, it's still early. Perhaps they'll improve. You say that every year. अभी मिशन This मिला must है. be the prefect's bathroom. ये दोनों तो घूम रहा अंदर और ये क्यों नहीं घूम रहा. अच्छा तो ये हो रहा है. अब घुमाना बराबर. मतलब इसको इधर लाने का था.
लेकिन हो नहीं पाता है ना, क्या करेंगे, मतलब लॉक खोलना भी यहाँ पे एक Preparing for परेशानी rebellion. है। Bruce, always must. Revelio. Perhaps Ranrock and Hyssop wouldn't be so combative if the Ministry would allow them to have wands. One of those goblins comes near me, I'll hand him his hat. Or helm, I suppose. Anyway, I'm not afraid of a goblin rebellion. My marching Professor Herb. Why don't you leave goblins alone, you troll? How dare you speak to a prefect that way? I'm a prefect too. ये सब जगह तो हम बाद में भी आ सकते हैं, एक बार खोल लिए ना। Patients in the hospital wing on account of my venomous tentacles. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. दवा खाने में भी खोलने लग गया मूनस्टोन, मतलब रात में चमकेगा। अभी 2 चीज तो ले लिए, वापस जाना है उसके I पास। had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? Claw? I know. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? What was what? I thought I heard something. Perhaps not. Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch rules. It's a majestic sport. Encompasses the whole of the human condition. Oh, how's that? बचते बचाते निकल लो रे बाबा चुपचाप। लगता मैं यही मिशन दिखा पाऊंगा, उसके बाद अगला मेन मिशन नहीं दिखा पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट। ये क्या, अलग ही जगह वो फंसा हुआ है। Revelio. इधर उधर भटक रहा है तू, यहीं से हमको जाना है। चल भाई जल्दी चाबी मूव कर तो हम निकले फटाफट। चल तेरी की तो कहाँ गया मिस्टर मून? Here we are. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. I'm glad to help you, but if have the time, but I'm make no promise. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Okay. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that.
चलो ये सब की तो I मिस्ट्री knew तो you were खुल the गई. one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. वो तो ठीक है. अब जब एक असाइनमेंट की क्लास जो है वो हम नहीं खोल पा रहे हैं तो हम चलते दूसरी की तरफ. तो 20 क्लास में दोस्तों हमें जाना चाहिए. अगर हम 20 क्लास में अभी जाएंगे तो जहाँ तक कि मेरा मुताल्ला है, मुकल्लात है जो भी है, अटेंड पोजीशन क्लास ड्यूरिंग द डे. ये एक अलग सर दर्द है यार. Wire and use a mandrake to multiple enemy. भाई जिसका मैंने कंप्लीट करा वो बताओ ना. कलेक्ट रोल बोयगन. असल में वो बैगन वाला मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए द मैन बिहाइंड द मून्स. तो ये रिवॉर्ड है. लेवल 2 और 3 का हम खोल पाएंगे. रिटर्न टू द. चलो मून के पास ही जाते हैं, लेकिन पहले हमको ये कलेक्ट करना पड़ेगा तो हम खोल पाएंगे लेवल 2 और लेवल 3 के लॉक्स. मतलब हमारे लेवल से कुछ मायने नहीं रखता है साला. 9 हमें ये कलेक्ट करना है. व्हाट इज दिस फ्लोटिंग अबव द कीपर पिंच. ठीक है भाई, ठीक है. मैंने एक प्रोफेसर फिग के यहाँ पे भी देखा था. फिग जो हमारे प्रोफेसर है. तब जाके अपने को रिवॉर्ड मिलेगा. ये मिस्टर फिग की क्लास इधर होनी चाहिए. ये तो एस्ट्रोनॉमी की है. डार्क आर्ट की है. डार्क आर्ट में तो नहीं मिला. फिग क्लास. Mine now, Demi guys. एक यहाँ हम देखे थे और एक कहाँ देखे थे. मैं 20 क्लास में इसके लिए नहीं जा रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज जो मज़ा है ना वो किरकिरा ना हो जाए, रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी. तो इसीलिए मैं इसको अगले पार्ट के लिए रख रहा हूँ. थोड़ा बहुत है ना ये मून कलेक्ट करने में हम जो है ना वो करेंगे टाइम पास. ए बाबू ऐसा करते हो. इसको लेंगे कैसे हम, ये तो बताया ही नहीं तुमने. उड़ भी नहीं सकते. 1 मिनट. अच्छा बीस्ट. इस वॉशरूम में है क्या? फ्लेमिंगो मूर्ति. इस वॉशरूम में भी नहीं है और इधर भी शायद से नहीं. खाली वो Beautification? I shan't tell. Certainly suits you. कौन है बे? शीशे में अलग ही टूटा फूटा दिख रहा है अलमारी, जबकि यहाँ तो बराबर है.
और टेंशन हो जाते हैं पुतले लोग। सोच रहे हैं यहीं से कूद जाऊं। ये क्या भाग Revelio. गया? हाँ, ऊपर जाने का है। दूसरा एंट्रेंस हमें ढूंढना पड़ेगा। मैप। तो इस पे देखता हूँ भाई कौन से एक्टिवेट किया हो मैंने। वो पुतला एक और जगह हमने देखे, शायद से हमने कहीं तो देखे थे। याद नहीं आ रहा। एक तो फिक की क्लास में तो देखा ही था और एक और जगह देखा था। असेंबली में तो नहीं देखा था कहीं। Revelio. ये देखो, ये तो आपस में लड़ रहे लोग। हो क्या रहा भाई? ये देख रहे हो दंगल? अपने आप को ही तोड़ दिया भाई दोस्त को। Lumos. अच्छा, तो ये वहां पर है। तो दोस्तों इसी के साथ हम ये पार्ट को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको अगले पार्ट में। तब तक टिल देन टाटा बाय बाय। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज अगले पार्ट में हम लोग बीस्ट को जो करेंगे, ठीक है।